हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेसिकली अ ब्यूटी ब्लेंडर वर्सेस अ फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश। आई हैव टेकन ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम BS मॉल। मैंने अमेजोन से परचेज किया था। मैं लिंक डाउन कर दूंगी। वर्सेस अ फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश लिया। ये भी मैंने अमेजोन से ब्रशेस का सेट परचेज किया था। तो हम देखने वाले हैं कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन इससे ज़्यादा अच्छी होती है कि वर्सेस ब्यूटी ब्लेंडर से। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट मैं अप्लाई करने वाली हूँ बायोटिक का नेक्टर। Make sure to prep your skin before applying the foundation. After this, basically आपको प्राइमर यूज़ करना होता है. डोंट अप्लाई अ प्राइमर. मैं बेसिकली एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ. तो आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल फ्रॉम बोरो प्लस. आपकी फाउंडेशन और आपके मॉइस्चराइजर के बीच में अप्रॉक्स 2-3 मिनट का फ़र्क होना चाहिए. लेट योर स्किन एब्जॉर्ब योर मॉइस्चराइजर. उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करा करो. So I'm using a foundation from L'Oreal Infallible One and I'm in the shade 140, that is the golden beige. So left side of my face I will apply with the beauty blender. I like mixing with some oil. कोई भी रोज गोल्ड ऑयल अप्लाई कर सकते हो. मैंने नायका से ले रखा है. इसको सोक कर लेना वाटर में और देन स्टार्ट डैपिंग. Then next I will use this brush and apply on it. ऐसे डॉटेड मोशन पे लगा दो. Will apply thickly loose powder just to have that final look. कि लगता कैसे है. I'm not applying concealer as of now. एंड इट्स रेडी. तो मैं अपना फुल फेस मेकअप सारा कर लिया है. एंड आई थिंक दोनों में इतना कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है. दोनों बहुत सही लग रही है. व्हाट यू फील गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Bye. See you in the next one.